मिशन के मिशन डायरेक्टर श्री मैनेसा विजय ने मिशन का automatic launch sequence for the launch of PSLV T57 ADITYA L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV T57 ADITYA L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced, and hereafter a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। एयरलेस शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकंड्स पर RCP का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर फोर्थ बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। इस दौरान स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं। PS2 command system production chain activation in progress. On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's Excel version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV Excel is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again, carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 command system activation in progress. आदित्य L1 जो कि लक्ष्यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 233 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतरिक्षित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिटी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिटी command system activation और in पेरिटी progress. के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतरिक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृद्धि में अंतरिक्षयान के लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वो L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की command system activation in progress. Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV C57 ADITYA L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of 4 S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-linked strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lift strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds, and the ground-lift and air-lift strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds.
second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engines. The optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the arranged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. By this time, the rocket would have attained 55 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated. As the launch vehicle attains 113 kilometers altitude and the dense atmosphere is no longer present around. These events are taking place in the operational regime of the second stage, which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 2.9 kilometers per second. The third stage, PS3, ignites about a second later and burns for 118 seconds, during which time it adds 12 kilometers to the altitude and enhances relative velocity tremendously from 4.9 kilometers per second to 7.3 kilometers per second. There is a ghost phase of 200 seconds that follow PS3 burnout, during which there is no thrust being developed, but the rocket continues to be steered. At 581 seconds into the flight, the PS3 separates and the last fourth stage of the rocket, together with the ADITYA L1 spacecraft, coasts for a long time thereafter. Till 1396 seconds into flight, the tracking station sets sharp both their Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter, there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone. The second burn is stranded by a ship-owned terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of ADITYA L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of ADITYA L1 will be confirmed by tracking station and forum. From the initial placement in low Earth orbit, ADITYA L1 will undergo a series of earthbound orbit raising and eventually we will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in India by report. हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है। हमारी जांच सुचारू रूप से जारी है। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए यहाँ External observation withdraw. व्यूअर्स गैलरी पे लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जनअक्रूर इनका रोमांच देखते ही बनता है। मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सबके बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर नोट कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 ADITYA L1 mission. We have 4 minutes, 23 seconds to launch. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकेंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा। फिर करीब 1600 सेकेंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकेंड तक प्रणव उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकेंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C-57 का प्रमोशन या ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शार्प, होल्डर, ड्रोने और बैक स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिप ऑन ट्रैकिंग या शिप ऑन टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतर्क्षेपण की पुष्टि गुरु बेंच के स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिट मिशन को देखनी है। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 30वां मिशन है। All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. Minus 55 seconds. On off and off. Minus 50 seconds. On beacon for off. हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Minus 25 seconds. PS2, PS3 open. Minus 20 seconds. PS ignition on down. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Pivot tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with ADITYA L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear windy sky. The rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrills are just amazing. Groundlit and air-lift strap-ons operating together with the first stage S139. Groundlit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंडलेट स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में एयरलेट स्ट्रैप-ऑन को यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा। Airlift strap-on separated. यहाँ इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The groundlet and airlift strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोजल पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में Second stage performance normal. Launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोजल पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का बल उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 50 सेकंड। Shah and Port Blair's tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्रूज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity initially in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per Payload second. very separated. The payload fairing covering the ADITYA L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. से बाहर जा चुका है, इसलिए उड़ान कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे कर दिया जाता है। Stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यहाँ पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। इसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोजल पर आधारित चरण है, इसे का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently,
The third stage of PSL is operational, developing nominal thrust. That's 5 feet. इस चरण में 7.6 टन के ठोस नोजल का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.8 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोमीटर का प्रणव उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का। जैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का। For the present mission, after BST completes its birth duration, the post phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. कुछ ही क्षणों में प्रजनन काल समाप्त हो चुका है और पोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Basically, it's combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 Normal. will start twice. It previously did times in duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the orbit of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Orbit of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. You'll be exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal probability of departure. सभी वैज्ञानिक दृढ़ता से अध्ययन करते हुए नासों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा बताए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal. That's 90 feet. Speaking a few words about the ADITYA L1.